ओके ओके सभी अपना कैमरा ऑन करो जल्दी से। उमर तुम कहाँ थे इतने दिनों से? एब्सेंट आ रहे हो तुम। तुम्हारा माइक्रोफोन बंद है, तुम कहाँ से सुनो? मैं कहाँ से सुनूं? शहबाज तुम। मैं कल भी क्लास में लेट आया था, आज भी। ये शहबाज क्या खा रहा है? अरे कैमरा ऑन करो सभी, कोई बात नहीं, मैं नहीं मांगूंगा। अच्छा ये है कि इस पे जरा मेहनत करो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें काफी कंस्ट्रक्शन है इस प्रूफ में, बट मैं इसको बहुत स्लो जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम इसको ठीक से धीरे धीरे समझ लो। सो लेट्स स्टार्ट, लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो अभी तक हमने क्या किया, मैंने एक फंक्शनल ढूंढा। लेट मी, अभी हमने काफी काम करना है, अभी हमने स्टेप 1 ही किया है, और स्टेप 1 में हम एज्यूम कर रहे हैं x इज अ फाइनाइट मेजर स्पेस। So once I do that, I can write f, तो मैंने दिखा दिया f belongs to LP mu, LP mu star, I can write f of phi is equal to, क्या था वो, हमें फिर से जाना पड़ेगा, f of phi अभी तक into g d mu where okay, where g is a unique function belonging to L1 mu and phi is a step function, any step function belonging, of course step functions lie inside p to power integrable functions, but I have to show that, मुझे ये दिखाना मुझे ये है, what do I have, f g d mu where g belongs to LQ mu and f is any function belonging to LP। मैंने नेक्स्ट स्टेप किया कि f को मैंने माना नॉन नेगेटिव फंक्शन दैट बिलोंग्स टू LP mu। मैंने अभी नॉन नेगेटिव फंक्शंस को लिया फ्रॉम स्टेप फंक्शंस, आई वांट टू गो टू न्यू फंक्शंस, जो कि मैं कर चुका हूँ एक्चुअली, मैं दिखा चुका हूँ फॉर अ स्टेप फंक्शन, मैंने अभी कहा था f ऑफ, एक मिनट, मैंने लिया था g को पॉजिटिव पार्ट, आई शोड दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी phi integral of phi n g plus is equal to f of f chi a, which of course is less than infinity, of course d mu यहाँ पे है, so now what do I have g's जो है, जो ना ये phi n's है, it's a sequence of increasing sequence of step functions, so therefore it's an integrable function. G is also an integrable function, so its positive part is an integrable function. So this is an integrable function, a sequence of integrable function that are increasing, and इसका जो integral है as limit approach infinity is finite, so Levi's theorem applies. So by Levi's theorem इस sequence का जो limit होगा वो भी Lebesgue integrable होगा। So by Levi's theorem, जिसको हमने कल रिपीट किया था, यूज किया था, by Levi's theorem इसका जो लिमिट है वो क्या है, that was fg plus जो है it also is integrable, and of course f of f chi a would be then equal to integral fg plus t, that's just जो हमने इससे पहले किया था, क्योंकि ये लिमिट इसके बराबर है, लिमिट्स वुड आल्सो कन्वर्ज, ये बन जाएगा, क्योंकि इसका लिमिट fg प्लस है, ये यहाँ पे बन जाएगा इंटीग्रल fg प्लस t में। ओके, once I am done that,
क्योंकि इसका लिमिट है तो ये आ जाएगा. Once I have done that, similarly I can prove for the negative part of the g. I can show that f of g minus belongs to L1. So that should be straightforward. And f of, okay, you can do that because g minus is also a non-negative function. So, and साथ में f of fg minus f into chi of p is equal to minus integral fg minus t. ये थ्योरम बहुत बड़ा है, तो ये हिस्सा तुम जस्ट फॉलो द स्टेप्स जो पहले वाले के हैं, बिल्कुल यू विल गेट दिस. डेफिनेशन ऑफ g प्लस एंड g माइनस मैं बता चुका हूँ. ओके, लेकिन यहाँ मैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन अगर b लूंगा जहाँ पे जो f है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे f पॉजिटिव है, तो नेगेटिव है तो यू विल टेक इट टू बी माइनस f. जो भी है, मतलब जस्ट हैव टू फॉलो द स्टेप्स. Once I am done that, so then of course g can be written as, so it's obvious, thus for every f every f हो गया. देखो f of g plus जो है वो बिलोंग करता है L1 म्यू में. f g minus जो है वो बिलोंग करता है L1 म्यू में. जो पहले हमने ये प्रूव किया, मैंने कहा ये ऐसे ही प्रूव होगा. सो f into g is equal to f into g plus minus g minus, because it's a that's the definition. So this is equal to f of g plus minus f of g minus. So this is a vector space, so it belongs to L1 mu. So we have, and of course furthermore जो f है, क्योंकि हमने नॉन नेगेटिव के लिए किया था, मैंने किसके लिए किया था, f is a non-negative function for LP mu. Using the same thing, I can actually show, thus for every f belonging to LP mu, let me write it like this. fg जो है वो बिलोंग करेगा क्या बोलते हैं L1 mu में. मतलब this is well defined. उसकी वजह ये है कि I can also write f as some of its positive parts and negative parts. अगर मैंने नॉन नेगेटिव के लिए प्रूव किया है, if I have proven that for any non-negative function fg belongs to L1 mu by Levi's theorem, then it would imply that f plus फिर से वही f1 plus g belongs to L1 mu and f1 minus g. अब मैं इसको break करूंगा into its positive and negative part, and since it's a vector space, it would imply that fg belongs to L1 mu for all LP. So far मतलब ये well defined है, यानी fg d mu is well defined for, अभी तो खैर characteristic function के लिए हमने इसको define किया था using the functional f. So this thing is valid. This thing is indeed integrable, right? For all f. And remember, हाँ, actually मैं L1 की जब बात कर रहा हूँ तो मुझे दिखाना है उसका mod integrable है, but you know that fg mod ये होगा. इसको थोड़ा ब्रेक करना है into 4 parts, and you know that अगर f इसके बराबर है तो mod of f होता है बराबर f plus plus f minus. So fg belongs to L mu. It would actually इससे ये प्रूव होता है इसका मॉडुलस p इंटीग्रेबल होगा. तो ओके, एंड सिंस यार मेजरेबल मॉड अगर इंटीग्रेबल है तो वो फंक्शन भी इंटीग्रेबल हो. वैसे जब मैं कह रहा हूँ ना ये, इट मींस दैट एक्चुअली fg belongs to L1 mu, और चूंकि ये मेजरेबल फंक्शंस है तो उसका मतलब fg भी बिलोंग करेगा. मतलब fg मतलब दिस इज वेल डिफाइंड, विदाउट मॉड ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है.
So once I am done that, so I have shown that fg belongs to d mu, and of course f of f जो है that is integral of fg d mu, right? Again using the क्या बोलते हैं इसको linearity of f, using the linearity of f, क्योंकि ये इसको ब्रेक करेंगे वही पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट्स में, पॉजिटिव पार्ट नॉन नेगेटिव्स के लिए हम प्रूव कर चुके हैं, ब्रेकिंग इट टू पॉजिटिव जो ना वो सारा कुछ है, ये एक्चुअली यहाँ मेंशन करेंगे तो ये और बहुत बड़ा प्रूफ हो जाएगा, इट्स ऑलरेडी वेरी लेंथी, बट आई एम सेइंग यूजिंग linearity of f that you can understand. Okay, to complete the proof, अब हमारा मेन काम है एक्चुअली, to complete the proof, it remains to be shown यहाँ, right, it remains to be shown, तो ये इसका हिस्सा नहीं है, okay. So it remains to be shown that G belongs to in fact LQ mu. उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा. To this end, let E sub n be equal to the inverse image x belonging to x such that modulus of gx is less than equal to n. So अगर मैं इसको simplify करना चाहूँ या थोड़ा different तरीके से लिखना चाहूँ, it is actually G inverse of minus n, इसकी inverse image. इसका मतलब ये measurable sets हैं, because G जो है वो ऑलरेडी हमें पता है L1 म्यू में है, तो नहीं G कहाँ बिलोंग करती है, हाँ अगर G मेजरेबल है तो दिस मस्ट बी अ मेजरेबल सेट. एनीवेज, सो ओके, लेट fn बी इक्वल टू, fn को मैं डिफाइन करूंगा विद द हेल्प ऑफ G, where G is a function that is here, and I think we've shown that G belongs to L1 mu. By Radon-Nicodemus theorem, G does belong to L1 mu. So this is the same G, so it is a measurable function. Now therefore these ENs, they are inverse image of closed intervals of a measurable function, therefore measurable. So अगर मैं Fn को अब लिखूं, define करूं, modulus of G raised to power q minus 1 into chi En, characteristic function of En, multiplied by signum of G, और तुम्हें पता है signum of G is 1 if G is non-negative, otherwise minus 1. So then सीधे लिखते हैं. Now since each Fn is essentially bounded, it must be contained inside. तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि कैसे अगर हम इसका मॉड लूं, so it would be, of course चूंकि मैं ले रहा हूँ En और मैं रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ फंक्शन को En पे, बाकी हर जगह 0 है, तो इसका जो मॉड होगा, so that would be less than equal to n for each n. So therefore they are bounded and hence essentially bounded, and therefore it's a sort of a bounded measurable function. When I restrict it to chi En, it is a measurable function. So what? So it is essentially bounded, and since जो G है वो measurable है, therefore this is also measurable. So measurable bounded functions, जो essentially bounded functions or measurable functions हैं, then they must belong to LP. So Fn, actually they must belong to any LP. They are not just integrable, they are any power integrable. So because you know that L infinity is so on and so forth, it would be contained in L2, would be contained in L1. तो ये हमें पता है ये sequence. इतना लंबा चौड़ा. Moreover, I hope ये खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे कल फिर से रिपीट करना पड़ेगा. Fn into G is just mod Fn raised to power P.
तो जैसे मैंने fn को डिफाइन किया था, इसको अगर g से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू गेट, सो fn into g, तो सिग्नम g into g हो जाएगा mod of g raised to power q. So I can, चलो लिख देते हैं fn raised to power p को, मैं ऐसा हमने किया है उधर भी, तो ये इसके बराबर क्यों होगा, let me write it down, डायरेक्टली लिखने के बजाय इसको करते हैं. So this would be actually g raised to power क्या था अपना, q minus 1 into p, what do you have, नहीं ऐसा है, फिर है chi e sub n, फिर है I think g है, नहीं signum g, signum g means mod of g divided by g. So अगर हम इसको करेंगे raised to power, नहीं, मैं क्या लिख रहा हूँ, let me, इसको ऐसे लिखेंगे, हाँ ठीक है, ये अपना f है, इसको होल रेज्ड पावर p, चलो मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ. क्या हो रहा है एक्चुअली, जब कोई ज्यादा सिंपल करने की कोशिश करता है ना, उससे गड़बड़ हो जाती है. मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर साइड में एक्सप्लेन करता हूँ. सो fn g is equal to mod fn raised to power p, which is the same thing as mod g raised to power q, which into chi en. So now which would converge to mod g raised to power q upwards as n approaches infinity. अब इसको मैं साइड पे ही एक्सप्लेन करूंगा, वो बेटर है. Now look at this, mod fn raised to power p जो है वो होगा mod g into what that was, that q minus 1 into chi e n into signum of g, यही था. So इसको whole raised power p करेंगे तो ये बन जाएगा mod g raised to power, हाँ mod लगाने के बाद, अब सिग्नम का mod तो 1 आएगा, so this would be q minus 1 into p into chi e n raised to power p, of course mod. So that is just, chi e n is never negative, characteristic function is either 0 1, so you can just remove the mod. So that would be g raised to power, एक ही चीज रहेगी, qp minus 1 is q, right? So into chi e n. So ये तो हो गया fnp is equal to this thing, but this is equal to fng, है ना, because fn into g जो है वो बराबर होगा mod g, qp minus p is q, ठीक है, it would be equal to mod g raised to power q chi e n into signum of g multiplied by g, और यहाँ पे q minus 1 है, so that would be, this would be just mod of g, so it would be, यानी ये तीनों चीजें बराबर है, whatever it is. So you have, मैंने क्या लिखा, fng is equal to this thing, अब मैंने थोड़ा पहले इसको लिखा बाद में इसको, ये तीन चीजें बराबर है, which would converge to g, because chi of en is actually this set, en was the inverse image of g, en was g inverse of minus n. So this chi en restricts this map within the range minus n. So as n approaches infinity, it would go to minus infinity to plus infinity. So this would actually be increasing. It would increase as इसकी डोमेन बढ़ती जाएगी, तो फंक्शन का जो वैल्यू है इन द मॉडुलस वो भी पॉसिबली बढ़ेगा ही, घटने का तो सवाल ही नहीं. सो इट वुड बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड इट वुड कन्वर्ज टू द होल ऑफ जी विदाउट दिस रिस्ट्रिक्शन, बिकॉज़ इसकी डोमेन पूरी की पूरी आ जाएगी. उफ, इतना छोटा सा के लिए इतना टाइम. देयरफॉर इंटीग्रल mod g raised to power q chi e n d mu is equal to integral fn g d mu, क्योंकि ये दोनों बराबर है.
that is equal to, by our definition, f of fn, because जो fn है, they belong to LP mu. तो LP mu के लिए हम कर चुके हैं, ये इस तरह से लिखा जाता है, okay, और G belongs to L1 mu, but we have to show that it belongs to LQ. चलो ये कर देते हैं. So this is what I have. So, but this is a linear functional, and this is non-negative. So this is less than equal to norm of f, this capital F, into norm of fnp, which is equal to norm of f into integral fnp d mu whole raised to power 1 by p, which is equal to norm f into integral norm g raised to power q chi en d mu whole raised power 1 by p, and of course once I got this thing, तो इसको मैं यहाँ transpose करूँगा. It implies that integral g raised to power q chi en d mu whole raised to power 1 minus 1 by p is less than equal to norm of f, which is a finite thing. That is integral mod g raised to power q chi e d en d mu 1 minus 1 by p is 1 by q is less than equal to norm of f, which is finite. Now this is true for all n, and right hand side does not depend upon n. So letting n approach infinity, or saying by Levi's theorem, because you've got a sequence of integrable functions that are dominated in the limit, the integral of the domination नहीं, इसका limit जो integral का है वो finite है. So by Levi's theorem, इसका जो g raised to power p must be integral, जो इसका limit है, which means that g belongs to, sorry, q है ना यहाँ पे, I think so it's q, क्योंकि इसका limit होगा g raised to power q यहाँ पे. Okay, so g belongs to LQ integrable. So we are done. केस सेकंड होगा अब जनरल केस, उसमें भी हमें लंबा चौड़ा आर्गुमेंट चाहिए, लेकिन हम ये पहला वाला केस यूज करेंगे, द जनरल केस, यानी जब अब x need not be a finite measure space. अब हम यूज करेंगे पहला वाला, उसके लिए फॉर ईच a belonging to lambda mu, यानी its mu measurable set, we write LPA to be equal to all f belonging to LP mu such that f is 0 on a complement, right? f measurable है, p to power summable है, लेकिन a के बाहर ये 0 है. I could have also written, चलो मैं लिख देता हूँ, note that LPA can also be written as f into characteristic function of a such that f belongs to LP. ये फिर से हो गया, ये measurable function है, और of course this is 0 on a complement, this product of functions. Okay, थोड़ा लंबा चौड़ा है ये भी, but we have to use this Levi's theorem I think again and again. Now let's consider this. Let this C be the collection of all mu measurable sets such that outer measure of A is finite. So by case 1, जो हम कर चुके हैं, by case 1, because ये इसका measure finite है, it is obvious, yeah, it follows that there exists a unique G sub A belonging to LQA such that f of
f into chi a, यानी अगर मैं डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करता हूँ तो दिस सेट ऑफ फाइनाइट मेजर, the previous step 1 applies, f into ga d mu for all f belonging to lp mu. एक्चुअली होना चाहिए for all l f belonging to lpa, लेकिन फिर यहाँ f में हटा सकता हूँ, लेकिन डजंट मैटर, मैंने chi a से मल्टीप्लाई किया तो आई कैन राइट इट लाइक दिस. ये प्रोडक्ट है, ये लग नहीं रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे. ओके, f multiplied by chi. Moreover, norm of g sub a q is equal to supremum over mod of f into chi a, such that norm of f, it is the definition of the norm, not the definition. We have shown that actually by previous theorem में हमने दिखाया था, ये जो norm g q है ये इस functional के norm के बराबर होगा, लेकिन चूंकि g a डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करता है तो यहाँ पर भी वैसा ही चलेगा, but this would be supremum over a smaller set, so this would be less than equal to norm of f. मतलब norm of f means जहाँ पर ये chi a साथ में नहीं है, norm of f is, चलो, this is supremum of f chi a को हटाना है, such that norm f, of course p is less than equal to 1. चलो हमें p लिख देता हूँ. So this ga, now this is true for all a belonging to c, right? Because for all a belonging to c this is true, this is equal to this thing. So अगर मैं इसको less than equal to 1 करता हूँ तो मतलब by previous theorem हम ये दिखा चुके हैं, whenever I can write it like this, then this is equal to norm of f. तो यहाँ पे g f का जो norm होगा वो norm of f इसके बराबर होगा when I restrict my domain to the functions f into characteristic function of a, and because this is a smaller set, a smaller part, so therefore this would be less than equal to norm of f. Done. So this collection is a bounded set, so let a be equal to supremum of norm g sub a q such that a belongs to c. Of course ये सारे के सारे set element जो है ये less than equal to norm f है, and चूंकि norm is by f is a bounded linear function, so this is a finite real number, so तो इसका supremum भी इससे less होगा क्योंकि ये सारे के सारे इससे less than equal to है. Now we observe that कितना लंबा है, if actually ये होना नहीं चाहिए इस तरह से, it should be just discussed in the class various parts. तुम घर पे करो और फिर मुझे पूछो कि यहाँ क्या है. If A is a subset of B, then obviously GA is equal to GB for on A, है ना? Because GA का मतलब है G into characteristic of A, and norm of G, नहीं, modulus of G actually would be less than equal to modulus of GB, क्योंकि इसका सेट बड़ा है जहाँ पे वैनिश नहीं होता, अदरवाइज ये सेम है. तो which would imply, तो pth पावर लगा दो, फिर इंटीग्रल लगा दो, फिर pth रूट निकालो, क्योंकि all those operations would preserve the order. You should have GA Q is less than equal to G sub B जो इसका Q's norm हो. Okay. Okay. कहाँ गया? और मसला ये है कि ये इतना लंबा प्रूफ है तो मेरे नोट्स कहाँ? ओके, चलो देखते हैं. So I've got a, now look at this set of real numbers. So these norms where a belongs to c, so it has got a supremum, and supremum is a limit point of the set, so you can find a sequence, a sequence here that would converge to this a. Idea वही है actually. फिर भी so लिख देता हूँ. So therefore it follows that
there exists an increasing sequence of sets, increasing in the sense that one is subset of the other, an contained in this C such that, क्योंकि order को follow करता है, G of an Kth norm में जो है, it would converge to this supremum as n approaches infinity. ठीक है? So I have what? So it implies that so what does it mean? So जब मैं कह रहा हूँ Kth norm, it in a way means that of course this is less than infinity. तो इसका मतलब ये हुआ ना, limit n approaches infinity. How should I do it? G a n d mu, of course यहाँ raised to power q होगा. इसका मतलब है limit n approaches infinity integral g a sub n raised to power q d mu whole raised power 1 by q जो है, this is less than infinity. तो ये अंदर जो है less than infinity होना चाहिए. So it means that this is a sequence of integrable functions. ये जो यहाँ पे है, क्योंकि इनका integral exist करता है, they are qth power integrable. So इनका जो limit में जो integral है, they are increasing. They converge to a limit a, and of course which is finite. So अगर ये finite है, तो इसका मतलब इसका limit जो होगा, वो integrable होगा, and we can interchange the limits. So which combined with Levi's theorem कहेगा हमें shows that अगर मैं g को define करूं, gx is equal to limit n approaches infinity g sub a n x, x belonging to x belongs to and q, a भी q to power integral होगी. Clearly also g vanishes outside a equal to union n runs from 1 to infinity a n. So यहाँ तक हम पहुंच गए. Now what I want to do, should I finish it today? वही मैं सोच रहा हूँ, इसमें चूंकि लंबा चौड़ा है. Next week claim, ये इसमें important है. Next week claim that f vanishes, a capital F vanishes on all p to power integrable functions on the complement of this A. So indeed, if f does not vanish, on यानी हर एक कोई किल नहीं करेगा इन फंक्शंस को, then in view of, ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, ये होम असाइनमेंट में है जब मैं लिख रहा हूँ, then in view of norm denseness of step functions, ये एक होम असाइनमेंट भी हो सकता है. Step functions in LP mu, there exists a set of finite measure, which means there exists some b belonging to this C such that b is contained in a complement, and f does not vanish on LP. ये जो मैंने यहाँ लिखा, ये तुम्हारा होम असाइनमेंट है. इजी है, लेकिन अगर इसमें मैं डाल दूंगा तो ऑलरेडी बहुत बड़ा थ्योरम है. सो अगर हाँ, so f vanishes, तो ये हो गया such that
मैंने क्या लिखा, f does not vanish on, sorry, LPP, देखा क्या हो रहा है, and thus I can say GB जो है वो 0 नहीं हो सकता, for if अगर GB 0 होगा, it would imply that integral f into GP is equal to 0 for all f belonging, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, which would imply that f of f GP जो है, चूंकि लीनियर मैप है, GP जो है वो 0 होगा for all f belonging to LPP. It means that f vanishes on LPP. क्यों? क्योंकि मैं ले सकता हूँ यहाँ पे f को as constant function, LPP जो p पे constant है, so this would mean that g of f of GB would be 0 for, you know, for GB, every GB. So GB must not be equal to 0. And since P intersection AN is equal to 5 for all n, and B union AN जो है, it belongs to C. Because इसका भी मेजर फाइनाइट है, इसका भी मेजर फाइनाइट है, तो सम का मेजर फाइनाइट होगा, यूनियन का मेजर फाइनाइट होगा, और इसका इंटरसेक्शन होगा, because B lies outside the union of n runs from 1 to infinity, so it cannot intersect any AN. So furthermore, जो हमने सुप्रीमम डिफाइन किया था, इसका मतलब G AN union B जो क्यूथ इंटीग्रल है, तो this Q would be less than equal to its supremum A raised power Q, and norm of GAN union P Q का जो क्यूथ पावर है, using linearity of the integral and disjointness of this thing, मैं इसको सीधे ही लिखूंगा, it is GAN Q raised to power Q plus GB in norm का जो क्यूथ पावर Q है, which implies that ये इसके बराबर है, but this is less than equal to, चलो यानी इसका मतलब ये हुआ, चलो मैं लिखता हूँ GAN Q plus GBQ का raised power Q is less than equal to A raised power Q for all n, because this is true for all n, this is true for all n because they are disjoint. So letting n approach infinity, this would imply that ये हो जाएगा A raised power Q plus norm of GB raised to power Q is less than equal to A raised power Q. So ये it means this is less than equal to 0, लेकिन ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसका मतलब GB must be 0 almost everywhere. I think it implies that GB must be equal to 0 almost everywhere, a contradiction, क्योंकि हमारी स्पेस में almost everywhere का मतलब additive identity है, 0 है. Okay, so we got a contradiction, hence पहुंच गए, F vanishes on LPA complement. Let's hope ये खत्म हो जाए आज. Okay. So where are we? So let हम पकड़ते हैं इसको, F belong to LP. So we have G belongs to LP, ये हम प्रूव कर चुके हैं, where G of X is equal to limit n approaches infinity G sub AN of X. So this is the definition, which implies that, of course, F into G belongs to L1 mu, ये तो हमने किया ही है. Thus, F into GAN must converge to FG, and since